अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ टॉक में वहाँ के चऊं था भलीकार। प्रोग्राम में अॼु पाण ॿिनि मामलनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पहिरें हिसे में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ईरान अमरीका जी जेका सूरत हाल आहे। दावाऊं तमामु घणियूं थियनि पियूं, फाइनल मुआहदे जे हवाले सां ख़बरूं बि अचनि पियूं। जीअं गुज़िरियल जुमे ते इहे ख़बरूं आयूं त फाइनल डील जेका आहे उहा तइ थी चुकी आहे। ट्रम्प साहिबु आबनाए होर्मुज़ खोलण जो ऐलान बि कयो ऐं इहो ॿुधाए पियो त बसि सिग्नेचर रहियल आहिनि प्रेसिडेंट ट्रम्प जूं। बहरहाल अञा ताईं उहा त कोन थी सघी, पर हिन विच में असांखे नज़र अचे पियो त जेके ड्रोन हमला आहिनि उहे ईरान जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि ख़ासि तौर ते बंदरगाहनि ते कया विया ऐं ईरान जेको आहे उनजो वरी जवाब बि ॾिए पियो ऐं कुवैत ते जेके ईरान जवाबी हमला कया आहिनि उनजे नतीजे में अॼु जेके ख़बरूं साम्हूं आयूं आहिनि कुवैत जे तरफ़ां ॿुधाए पियो जेको बैन अल-अक़वामी अॾो आहे उनखे निशानो बणायो वियो ईरान जे तरफ़ां, जंहिंजे नतीजे में हिकु माण्हू जेको आहे उहो मारिजी वियो। 63 खां वधीक माण्हू जेके आहिनि से ज़ख़्मी थिया आहिनि। ईरान जो इहो चवणु आहे त ज़ाहिर आहे इहे जवाबी हमला कया आहिनि जेके पहिरें ईरान ते हमला थिया। सो हिकिड़े पासे सीज़ फायर, वरी महदूद पैमाने ते कारवायूं, फाइनल डील कॾहिं थींदी, उन जे हवाले सां ट्रम्प साहिब त जेको ताज़ो इंटरव्यू ॾिनो आहे उन में बि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त ईरान सां ॻाल्हियूं हलंदड़ आहिनि ऐं हाणे वक़्तु अची वियो आहे त फाइनल मुआहिदो जेको आहे सो उहो थिए। ऐं गुज़िरियल ॾींहुं इहा बि दावा आई त हिकु हफ़्ते जे अंदरि जेको आहे सो फाइनल मुआहिदो थी सघे थो। वाक़ई छा अहिड़ी सूरत हाल आहे, उन ते पाण ॻाल्हाईंदासीं। गॾोगॾु नेतन्याहू ऐं ट्रम्प साहिब विच में जेका ॻाल्हि ॿोल थी, जेके लफ़्ज़ इस्तेमालु थिया, उन जे हवाले सां बि ट्रम्प साहिब ताज़े इंटरव्यू में चयो आहे त हा उन्हनि खे कावड़ ज़रूरु आई हुई त लेबनान में जेको कुझु करे रहियो आहे इसराइल, सो उन ते बि ॻाल्हाइबो। ऐं गॾोगॾु हिकिड़ा अमरीकी इंटेलिजेंस चऊं उन्हनि जा तर्जिया निगार आहिनि लेरी जॉनसन साहिबु, उन्हनि हिकिड़ी पॉडकास्ट में इहा दावा कई आहे त ईरान एटमी जेके आहिनि से उहे धमाका बि करे सघे थो, एतिरी मतिलबु उन तयारी करे वरिती आहे ऐं पाकिस्तान जे थ्रू ईरान अमरीका ताईं इहो पैगाम पहुचायो आहे ऐं उन्हनि इसाक डार जो नालो खयो, दो के इसाक डार उनजी तरदीद कई आहे। सो इहो मामिलो छा आहे। तेल जे हवाले सां पाण जेकॾहिं ॾिसूं त 1 अरब बैरल ताईं तेल जेको आहे आलमी मंडी में उनजी खोट आहे। ॿुधाए पियो सूरत हाल ईअं रही त ईंदड़ जेके 2 महीना हूंदा जुलाई अगस्त उन में सूरत हाल तमामु घणी ख़राबु थी सघे थी। सो इहे मामला हूंदा पहिरें हिसे में उन ते ॻाल्हाइबो ऐं ब्रेक खां पोइ जॾहिं पाण वापसि ईंदासीं त पाकिस्तान जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ॻाल्हाइबो। प्रोग्राम जे पहिरें हिसे में ॻाल्हि ॿोल जे लाइ प्रोफेसर इनाम भट्टी साहिब जेके आहिनि उहे असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। प्रोफेसर साहिबु तमामु घणी महिरबानी सर, तव्हां असांखे वक़्तु ॾिनो। कीअं था ॾिसो सर ही हिकिड़े पासे जीअं पाण ॾिठोसीं गुज़िरियल जुमे ते इहे ख़बरूं अचणु शुरू थी वियूं त सभु कुझु ॼण त तइ थी चुको आहे, बसि हाणे ट्रम्प साहिब जी सिग्नेचर रहियल आहे, पर उहा सिग्नेचर त कोन थी सघी। पर ही महदूद पैमाने ते ई सही ईरान ते हमला कया विया, बल्कि अञा ताईं उहे थियनि पिया मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते। लेबनान में पाण ॾिसूं पिया त सीज़ फायर जॾहिं खां थी 8 अप्रैल खां त इसराइल उते कारवायूं तेज़ करे छॾियूं, ईरान जवाबी हमला करे पियो कुवैत में। सो सूरत हाल कहिड़े पासे वञे पई, वाक़ई का डील बील थिए पई या जेकॾहिं थिए पई ऐं ॻाल्हियूं बि हलनि पियूं त पोइ ही कारवायूं कीअं पियूं थियनि सर? मुंहिंजे ख़्याल में हिकिड़ो वॾो फ़र्क़ु आहे। उहो फ़र्क़ु इहो आहे त ईरान जेके बि डायलॉग में वेहंदड़ माण्हू जिन खे जेको आहे सो ॻाल्हियुनि जे लाइ घुरायो थो वञे, उन्हनि में तव्हां ॾिठो हूंदो अक्सर सभु जेके आहिनि इंतिहा दर्जे जा पढ़ियल लिखियल, के फिलासफ़ी जा आहिनि, के डॉक्टर आहिनि, के ॿियनि पंहिंजे शोबनि में आला तालीम रखंदड़ आहिनि। जॾहिं त ॿिए पासे अमेरिका जा जेके बि तव्हां ॾिसंदो डायलॉग में वेहंदड़ माण्हू उहे सभु जा सभु जेके आहिनि कारोबारी ज़हन रखंदड़ वापारी सोच जा जेके माण्हू आहिनि, जिन खे मुल्कनि जी हैसियत, उनजी तारीख़, जाग्राफी, पस मंज़र खां वधीक मौजूदा वक़्त में ऐं उन्हनि जा जेके पंहिंजा मुफ़ाद आहिनि कारोबारी, उन्हनि खे उहे नज़र में रखनि था। तंहिंजे करे हिकिड़ो वॾे में वॾो मसइलो जेको आहे उहे मुआहिदनि जे न थियण जो सबबु बणिजे थो। ईरान पहिरियों दफ़ो हींअर जेका अमेरिका सां वेट कई आहे उन में हुननि पंहिंजे मुकमिल हिकिड़ी नेशनलिज़म खे, तारीख़ खे ऐं हिस्टोरिकल पंहिंजे बैकग्राउंड खे अॻियां रखी करे हुननि सॼी जेका आहे उहा जंग विड़ी आहे, जंहिंजे ई करे हू जेको आहे सो काफ़ी पंहिंजो मज़बूत बीठा आहिनि। ॿिए पासे हिननि जो सॼो जेको फोकस आहे उहो सिर्फ़ु पंहिंजे कारोबारी मुफ़ादनि ते, जंहिंमें अक्सर तौर ते इहो ॾिठो वियो आहे त कहिड़े ॾींहं ते ट्रम्प खे ऐलान करिणो आहे त मुआहिदो नथो थिए, वरी कहिड़े ॾींहं ते ट्रम्प खे ऐलान करिणो आहे त हाणे बसि मुआहिदो थियण वारो आहे। ऐं उन सॼे ऐलाननि जो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु असरु जेको आहे उहो अमेरिका जे स्टॉक एक्सचेंज वॉल स्ट्रीट खां वठी करे
बाक़ी दुनिया जे ॿियनि जेको आहे सो स्टॉक एक्सचेंज ते बि असरु पए थो, ऐं ख़ासि करे हुन में जेका ऑयल इंडस्ट्री आहे उन ते वॾो हुनजो असरु पए थो। त ही सॼो फोकस हुन ते आहे। ॿी जेका अहम शइ आहे उहा इहा आहे त यूरेनियम वारे मामले ते अमेरिका सां ईरान शुरू खां वठी पहिरें मुआदे में बि हुननि इहो चयो त असांखे एटम बम ठाहिण सां को बि सरोकार कोन्हे, न ई असांजी नियत आहे। बाक़ी असां पंहिंजे ॿियनि मुरमुनि जेको आहे सो मुफ़ादनि जे लाइ यूरेनियम खे इस्तेमालु करण जी ज़रूरु कोशिशि कंदा रहंदासीं। जंहिंमें अॻियो मुआदो हिननि रद्द कयो ऐं वरी उन खां पोइ ट्रम्प जेको आहे सो उहा ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू करे थो। त हींअर बि ईरान पंहिंजे उन शइ ते क़ाइमु आहे। ॿियो जेके बि टेक्निकल माहिर आहिनि उन्हनि जो इहो चवणु आहे त थोरे ई अरसे में जेको 60% इनरिच थियल जेको मवाद आहे यूरेनियम जो, उहो हफ़्ते ॾेढ जे अंदरि एटॉमिक ग्रेड में तब्दील थी सघे थो, पर नंढे नुक़सान जे लाइ इन खे बि इस्तेमालु करे सघिजे थो जेकॾहिं किथे बि उनखे उछलायो वञे त उनजा जेके रेडिएशन जा असरात हूंदा उहे यकीनी तौर ते पोइ बि पइजी सघनि था। पर ईरान हिन वक़्तु ताईं उहो पंहिंजी जेका आहे हिकिड़ी सब्र खां या जंहिंजे ते करे उन कंहिं बि सबब जे करे उन खां पंहिंजो मुज़ाहिरो कंदो रहिया त उन का बि अहिड़ी भञकड़ी न कई आहे, बावजूदि इनजे जे अमेरिका ऐं इज़राइल हुनजे न्यूक्लियर रिएक्टर्स ते रिसर्च सेंटर्स ते हमला कया, उनजे बावजूदि बि हुननि का बि अहिड़ी शइ न कई। हाणे जेका उन खां पोइ जेका अहम शइ अची बीठी आहे उहा इहा आहे त ईरान जो हिन वक़्त ताईं जेको नुक़सानु थियो आहे उन्हनि जी डिमांड इहा आहे त हिकिड़ो त असांजा जेके मुजमिद असासा आहिनि उहे उन्हनि खे ओपन कयो, बाज़ी खां वठी करे 84 खां वठी करे जेके बि आहिनि उन खां पोइ जे जेके दौर जा आहिनि उहे बि ॾियो, ऐं ॿियो जेको हींअर जेको असांजो नुक़सानु थियो आहे उनजी बि भरपाई थियणु खपे। ऐं हींअर जे नुक़सान जे लाइ त ईरान वरी हिकिड़ो फार्मूलो बि मुंहिंजे ख्याल में उहो डिस्कस करे छॾियो आहे, जंहिंमें ओमान बि हुन सां कंहिं हद ताईं एग्री आहे त हू जेका उतां गुज़रंदड़ जहाज़नि खां टैक्स वठंदा हू उन ते जेको आहे पंहिंजो जेको नुक़सानु थियो आहे उनखे वापसि बहाल करे वठनि। पर अमेरिका कंहिं बि तरह सां उहो नथो चाहे त स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ ते ईरान जी उहा जेका कंट्रोल आहे उहो बरक़रार रहे। हाणे उनखे मां नथो सम्झां त अमेरिका वधीक कंहिं बि जंग में वञी सघंदी, छाकाणि मां अॻे बि इहो चवंदो रहियो आहियां जेको ही ऑपरेशन एपिक फ्यूरी आहे इनखे जंग नथो चई सघिजे, इनखे ऑपरेशन चइबो आहे। ऐं इहो जो ऑपरेशन आहे इहो फौजी ऑपरेशन जो अख़्तियार प्रेसिडेंट खे आहे त कंहिं बि दुनिया जे मुल्क ते को बि ऑपरेशन करे ऐं वधि में 60 ॾींहं ते उहो ऑपरेशन जारी रखी सघे थो। उन खां पोइ हाणे जेका अमेरिका खे मुश्किल आहे उहा इहा आहे त हू जेते ताईं कांग्रेस खां परमिशन नथो वठे जंग जी मुकमिल तरह सां तेसि ताईं ईरान सां जंग नथो करे सघे। ऐं ईरान में उनजो ई फ़ाइदो वठे थो त हू जेकॾहिं काई बि थोरी बि अहिड़ी काई शइ थिए थी, जीअं अॼु जेको आहे सो हुन हिकिड़े आइलैंड ते हमिलो कयो आहे सुबुह सवेर, हुनजे जवाब में वरी ईरान जेको आहे सो कुवैत ऐं बहरीन ते अटैक कया ऐं यकीनी तौर ते कुवैत ऐं बहरीन ते जेके हमला थिया आहिनि त उहे कुवैत वारो त हुननि जो अॾो पकोल हुननि जे त एयरपोर्ट सां गॾु ई गॾु लॻोलॻि जेको आहे सो अमेरिकी एयरबेस बि आहे। त उन एयरबेस खे निशानो बनाइण सां गॾु ज़ाहिर आहे त हुनजी भरिसां जीअं सिंधी में चवंदा आहिनि सुख सां गॾु सावा बि सड़ी वेंदा आहिनि, त हुन ते बि यकीनी थियो हुओ त उनजे करे हू ईरान मुकमिल मुसलसिल चवंदो थो अचे त जेकॾहिं तव्हां असां सां एग्रेशन कंदो त असां बि हुनजी जवाबी कार्रवाई कंदा रहंदासीं। अॼु त हिकिड़ी ॿी बि शइ आई आहे त पंजो भेड़ो जेको आहे अमेरिका जो जंगी ईरान जे बकौल त असां उन ते बि अटैक कयो आहे। उहा तस्दीक अञा ताईं जेको आहे सो अमेरिका न कई आहे, पर ईरान जी मीडिया जेका आहे इहा दावा करे थी त उन ते बि अटैक कयो आहे। हाणे इहे जेके काउंटर अटैक्स आहिनि इहे हिननि खे हिकिड़ो सम्झो त पंहिंजी जवाबी कार्रवाई जेका नंढे हैसियत में थिए थी, पर हिनखे वरी बि न को ऑपरेशन में काउंट करे सघिजे थो न को जंग में काउंट करे सघिजे थो। ऐं मां नथो सम्झां त ॿिन्ही मुल्कनि जे हींअर मुफ़ाद में का वधीक वॾी जंग आहे, बल्कि आलमी प्रेशर ॿिन्ही ते वधीक आहे त हू कंहिं न कंहिं मुआदे ते पहुचनि। हाणे हुन मुआदे ते पहुचण लाइ मूंखे लॻे थो त ईरान जोहरी असासनि वारे मामले ते कंहिं हद ताईं एग्री करे चुको आहे। हाणे हुन में सिर्फ़ु कंहिं तरीक़े सां हिकिड़ो रस्तो कटिजे त आया इहो यूरेनियम कंहिं मुल्क जे हवाले कनि था या ईरान पाण वटि रखे थो या ॿियो केरु उनजी गारंटी खणे थो। बाक़ी स्टेट ऑफ होर्मुज़ ते ईरान कंहिं बि तरह सां उहो एग्रीमेंट करण लाइ तयारु न आहे, कंप्रोमाइज़ करण लाइ तयारु न आहे, ऐं साॻी वक़्तु वरी अमेरिका उनखे क़बूल करण लाइ तयारु न आहे। हाणे इहो
प्रेशर जेको आहे मुंहिंजे ख़्याल में जीअं तव्हां पाण ज़िक्र कयो त जेको शॉर्टेज वधे पई इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल जी, उहा 1 लख बैरल खां जेको आहे सो वधी वई आहे ऐं जेके उन्हनि जा रिज़र्व्स आहिनि जेके ॾुखियनि वक़्तनि में इस्तेमालु करण जा, उहे उन्हनि जा ख़तमु थींदा पिया वञनि। जापान हुजे, कोरिया हुजे या यूरोपियन कंट्रीज़ हुजनि। अच्छा प्रोफेसर साहब चवनि था त ईरान जी इहा बि हिकमत अमली आहे त इहो भले इहा सूरतहाल ईअं थिए त जीअं इन समूरी दुनिया जो प्रेशर पवे अमेरिका ते, गॾोगॾु पोइ वरी इलेक्शन बि थियणा आहिनि, सो इहो चवनि था त ईरान जी बि इहा हिकमत अमली आहे त भले ठीकु आहे, जो चइबो आहे न थकाइण वारी सूरतहाल या जी बिल्कुलु मां बि ईअं थो सम्झां त ईरान जेको आहे सम्झे थो त अमेरिका हाणे टिकंदो, छाकाणि इंटरनेशनल प्रेशर्स हुन ते पवंदा। ॿियो त अमेरिका जी मर्ज़ी जे मुताबिक़ न को यूरोप हुन में इंटरवेन कयो आबदार हुर्मुज़ खे खोलण जे लाइ, न जापान या कोरिया या ॿिया मुल्क जेको आहे हुन में आया, उन्हनि सभिनी इहो चयो त असां पंहिंजे तरीक़े सां आबदार हुर्मुज़ खे खोलण जे लाइ कोशिशूं कंदासीं। उन जे लाइ हुननि ख़ासि करे यूरोपियन यूनियन त पंहिंजा इजलास बि कया ऐं उन्हनि जेको आहे सो मीटिंग्स बि कयूं, हुन में इहो तइ बि कयो कहिड़े तरीक़े सां हुनखे खोलिजे। ऐं मां सम्झां थो त उन्हनि मुल्कनि में इन शइ ते आबादी ज़ाहिर कई वई त कंहिं तरह सां टैक्सिस अदा कजनि ऐं उनखे खुलियल रखण जे लाइ को रस्तो कढिजे। न त ईरान जेको उन ते टैक्स कोन थो रखे, ईरान थो चए त असांजी उते जेका गाइडलाइन आहे, गाइडेंस जेका आहे उहा असांजी हासिल कयो, तव्हां उतां पुरअमन तरीक़े सां पंहिंजो जहाज़ पास कराए सघो था, जंहिंजे करे जेको आहे सो उनखे नालो ॾियनि था जहिड़ो सम्झो त हुनजी जीअं थींदो आहे न कानवाए हिते असां वटि लॻंदी आहे त कानवाए त हुनखे पुलिस खे गवर्नमेंट ख़र्च थी ॾिए, पर किथे जेके सुभाणे कानवाए ते पुलिस ऑफिसर वेही चए बाबा सभु बसुनि वारा गाॾियुनि वारा हज़ार ॾियो त असांजो तेल जो ख़र्च जेको आहे उहो निकिरे, सरकार नथी ॾिए। त ही इन तरह जो हिकिड़ो हुननि तरीक़ो अख़्तियार कयो आहे। बिल्कुलु। अच्छा हिकिड़ो इहो बिल्कुलु 1 अरब बैरल ते जेकॾहिं तेल जी आलमी मंडी में शॉर्टेज ऐं जुलाई ऐं अगस्त में वधीक सूरतहाल ख़राबु थियण थी, उन ते पाण ॻाल्हाईसीं। ॿियो ॾिसूं त पिया त अमेरिका जे अंदरियां बि तमामु घणो दबाव असांखे नज़र अचे पियो ट्रम्प साहिब ते। कुझु माण्हुनि जो चवणु आहे जेका फाइनल डील थियण वारी गुज़िरियल जुमे ते या सिग्नेचर बैकलेश ड्रप खां ही पोइते हटियो आहे, उनमें न रुगो डेमोक्रेट्स पर रिपब्लिकन बि जेके आहिनि उहे ट्रम्प ते तमामु घणो दबाव ॾियनि पिया। उनजो जेको नतीजो थींदो उनखां उहो घबराइनि पिया। जीअं कल्ह पाण ॾिठोसीं जेका स्टैंडिंग कमेटी आहे अमेरिका जी, उते जॾहिं मार्को रूबियो वियो आहे त उनखां सख़्तु सवाल थिया आहिनि। उनखां इहो त पुछियो वञे त भाई ईरान खां ख़ैरात छो था घुरो डील जी बार बार, त अंदरूनी तौर ते बि अव्हांखे लॻे पियो त तमामु घणो दबाव आहे ट्रम्प ते, उनजी पूरी इंतज़ामिया ते। बिल्कुलु हींअर जेके हिकु त मिड टर्म इलेक्शन्स जो जेको थियणो आहे ऐं ॿियो जेका उनजी रेटिंग आहे उहा ट्रम्प जी वञी मौजूदा ट्रम्प रुगो न बल्कि रिपब्लिकन जी 30% ते वञी पहुती आहे। त उहा जेका रेटिंग आहे रिपब्लिकन्स जे लाइ हिकिड़ो तमामु वॾो सवालिया निशान हूंदो त सुभाणे जेकॾहिं ट्रम्प न बि रहे पर रिपब्लिकन पार्टी जेका आहे उहा पंहिंजी एतिरी सोसाइटी जे अंदरि पंहिंजो असरु विञाए वेहे त पोइ ईंदड़ वॾे वक़्त ताईं उन्हनि खे वापसि जेको आहे बहाल थियण में तमामु घणी ॾुखियाई थींदी। ऐं हींअर जेका सूरत हाल आहे उन में पब्लिक खां वठी करे ख़ुदि पंहिंजा रिपब्लिकन्स ऐं डेमोक्रेट्स उन्हनि जो प्रेशर आहे त कंहिं बि तरह सां वधीक जंग न थियणु खपे। ऐं उनखां पोइ जेका अहम ॻाल्हि आहे उहा आहे ख़र्चनि जी। हिन वक़्त ताईं जेके हिननि अख़राजात ॿुधाया पए उनखां 9 ते अख़राजात जेके आहिनि से वधीक ई करे चुका आहिनि। पहिरीं हिननि चयो 2 अरब, हाणे उहा वधी जेको आहे सो 12 अरब ताईं मथे जेको आहे चवनि था उहो ख़र्च थी चुको आहे। ऐं उनखां पोइ जेका नई ईंदड़ वक़्त में हिननि डिमांड कई आहे उहो $1 ट्रिलियन में जेका असां कई आहे, $1.2 ट्रिलियन जी डिमांड कई आहे पेंटागोन त असांखे जेको आहे सो वधीक जिदत आणण जे लाइ ऐं जेका स्पेस टेक्नोलॉजी में पाण खे मज़बूत करण लाइ असांखे एतिरा पैसा खपंदा। ऐं ॿियो मूंखे लॻे थो त हिननि जा जेके बि हिननि गल्फ जे अंदरि बेसिस हुया उन्हनि गल्फ जे बेसिस में जेको बि हिननि जो एयर डिफेंस सिस्टम हो उन्हनि खे चङो ख़ासो नुक़सानु पहुतो आहे। उन नुक़सान जे ई सबब जे करे ई जेको काथो कनि था पिया त एतिरो वॾो ख़र्चु थियो आहे। उनजो हिकिड़ो वॾो सबब इहो आहे त जेके बि एयर डिफेंस सिस्टम उते मौजूदु हुया उन्हनि खे उन्हनि पहिरें ई धक में निशानो बणाए नुक़सानु पहुचायो, जंहिंखां पोइ हिननि जेको आहे सो हिकमत अमली सां पंहिंजा जेके बि जंगी ॿेड़ा आहिनि उहे पर्शियन गल्फ में ऐं जेको आहे सो सॼे हिन में गल्फ जे एरिया में हिन जेको आहे सो मोकिलणु शुरू कया। त इनखे इन सां जेकॾहिं ॾिसिजे त अमेरिका जी अॻी इकोनॉमी जेका आहे उहा डिक्लाइनिंग आहे, उन्हनि जी प्रोडक्शन जेका आहे उहा जेका फॉरेन एक्सचेंज जेका आहे उहा बि उन्हनि जी जेका आहे खसारे में थी रहे। उन्हनि जी जेका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट आहे उनजो वॉल्यूम एतिरो न आहे त उनजे बावजूदि जेकॾहिं जंगियुनि में वेंदा त उनखे वधीक नुक़सानु थींदो। ॿियो जेको वॾो नुक़सानु आहे उहो यूरोपियन कंट्रीज़ जो आहे। यूरोपियन इकोनॉमी जेका आहे उहा वेहंदी पई वञे। यूरोपियन कंट्रीज़ जेके आहिनि
उन्हनि जी सॼी जेका तवानाई आहे उहा इन्हनि रूट्स ते मुनहसिर रहे थी ऐं जेकॾहिं उहा शॉर्टेज थिए थी त उन्हनि जी जेका प्रोडक्शन आहे उहा त घटिजे ई घटिजे थी पर ईंदड़ जेको सियारो आहे अगस्त खां पोइ जेका सूरताल उते पैदा थींदी उहा तमामु वॾी ख़तरनाक सूरताल पैदा थी सघे थी जेकॾहिं इहा तवानाई जी जेका रसद आहे उहा एतिरी शॉर्टेज थिए ऐं स्लो थिए त उहो उन्हनि खे पोइ अॻिते जे लाइ उन्हनि खे वरी रूस तां वधाइणो पवंदो पोइ नतीजो इहो निकिरंदो त अमेरिका नाटो ते पंहिंजो असरु मुकमल विञाए वेंदो ऐं पोइ रूस जो यूरोप जे अंदरि वधीक जेको आहे पंहिंजी गिरफ़ मज़बूत थींदी वेंदी। अच्छा सर ही जेका समूरी सूरत बिल्कुलु इन में त ट्रम्प साहब वरी दावा इहा पियो करे त विदिन वीक हफ़्ते जे अंदरि अंदरि को फाइनल मुआहिदो थी वेंदो ऐं कल्ह जेका उन्हनि जी ॻाल्हि ॿोल थी आहे नेतन्याहू सां ऐं जेका ख़बर मीडिया में लीक कई वई या कराई वई पाण तीअं चऊं जेके जुमिला इस्तेमालु कया आहिनि अॼु पंहिंजे इंटरव्यू में ट्रम्प साहब जी तस्दीक बि करे पियो त वाकई अहिड़ो को इम्कानु आहे की नज़र अचो छाकाणि त इहो इन करे पियो मां पुछां छाकाणि बार बार हू पंहिंजा बयान ॾेई उन तां फिरी था वञनि न ट्रम्प साहब जे करे दुनिया हाणे ॼण त उन ते ट्रस्ट करण लाइ तयार ई कोन्हे त वाकई को हफ़्ते जे अंदरि को इम्कानु नज़र अचे पियो त को फाइनल मुआहिदो थी वञे ईरान ऐं अमेरिका जो लॻे थो त ट्रम्प जेको आहे उहो नेतन्याहू जे इन्फ्लुएंस में अची थो वञे उनजो प्रेशर उन ते वधी थो वञे जेॾी महिल बि मुआहिदनि खां फिरे थो उन में हिकिड़ो सबबु जेको आहे उहो इज़राइल जो आहे छाकाणि जेॾी महिल बि अॻिते वधे थो उन वक़्तु इज़राइल जेको आहे कंहिं न कंहिं तरीक़े सां लबनान में वधीक कार्रवाई करे थो हिकु तरफ़ लबनान ऐं इज़राइल जो अमेरिका में ॻाल्हियूं हलंदड़ ॿिए पासे 50% खां मथे एरिया जेको आहे उन में इज़राइल इन्वेंशन करे चुको आहे इन्वेजन करे चुको आहे अंदरि दाख़िल थी चुको आहे ऐं हुनजो इरादो आहे त 70% ताईं इलाइक़नि ते कब्ज़ो कंदुसि लबनान जे ते ऐं उहा जेका सूरत हाल आहे जंहिंजो तव्हां अॼु ज़िक्र बि कयो हींअर त हुन में नेतन्याहू खे जेको आहे हुन इहा हिकिड़ी हुनजे ख़िलाफ़ बि हुन ॻाल्हायो आहे त नेतन्याहू जेको आहे सो अकुल खां ख़ाली आहे त इन तरह सां मुंहिंजे ख़्याल में हुननि जो पाण में हिकिड़ो टकराव बि रहे थो ऐं हींअर जेकॾहिं उहा शइ वधे थी त मूंखे लॻे थो ट्रम्प खे पंहिंजे अमेरिकन मुफ़ाद खे ऐं अमेरिकन पंहिंजे पॉलिसीज़ खे नज़र में रखिणो पवंदो न की इज़राइल जेके छाकाणि इज़राइल जे मुफ़ादनि ते जेकॾहिं हलंदो त पोइ रिपब्लिकन ऐं ट्रम्प जेको आहे अमेरिका जे अंदरि पंहिंजो असरु विञाईंदा न रुॻो इहो पर मुस्तक़बिल में वधीक नुक़सानु हासिलु कंदा तंहिंजे करे हफ़्ते ॾेढ जे अंदरि कंहिं न कंहिं मुआदे ते हिननि खे पहुचणो पवंदो तॾहिं ई जेको आहे सो ईंदड़ वक़्त में महीने जो हिननि खे टारगेट आहे महीनो जेकॾहिं इहे ई स्टेट ऑफ फॉर्मत रहियो त उन में आलमी मंडी में तमामु वॾो बहिरान पैदा थी सही अच्छा प्रोफेसर साहब कुझु माण्हू वरी लिबनान वारी जेका सूरत हाल आहे उनखे इन तनाज़ुर में बि ॾिसनि पिया त जेका फाइनल डील न पई थिए इन जे पुठियां बि इहो आहे त अमेरिका ऐं इसराइल ॿिन्ही जी इहा ॼण त प्लानिंग खणी चऊं या इन ॻाल्हि ते उहे एग्री आहिनि त भई जेतिरा इलाइक़ा तव्हां कब्ज़ा करे सघो था उहो करे वठो उनखां पोइ ई असीं फाइनल डील ॾांहुं वधी सघूं था ऐं उनखे ॼण त उनजी आशीर्वाद जेको आहे अमेरिका जो नेतन्याहू खे उहो हासिलु आहे ऐं उनजे करे उहे अहम जेके क़िला आहिनि उन्हनि ते कब्ज़ा करणु या 20-25 किलोमीटर 40 किलोमीटर बि चवंदा अंदरि ॾखण लिबनान ते दाख़िल थी वञणु सो इन जे करे बि कुझु माण्हू चवनि पिया त डील में देरि पई थिए फाइनल में जेसि ताईं उहे जेके इसराइल पंहिंजा मक़सद आहिनि उहे हासिलु करे वठे कुझु माण्हू इन तनाज़ुर में बि इनखे ॾिसनि था तो 86 में इज़राइल जेको आहे सो इन ई किले ते पहुतो हुयो एतिरनि इलाइक़नि ते आयो हो पोइ वरी मुआहिदा थींदा विया वरी पोइ वापसि उनखे थियणो पियो त हींअर बि इज़राइल जेको आहे उहो चाहींदो हूंदो त इन्हनि इलाइक़नि ते कब्ज़े करण खां पोइ बि वरी जेके नवां मुआहिदा करे उन में ख़ासि करे हिज़बुल्लाह जो ख़ात्मो जेको आहे उन ते उन्हनि जो फोकस हूंदो हमेशह जे लाइ हिज़बुल्लाह उसे ख़तमु थिए पर अॻे बि उहो हिज़बुल्लाह खे हिन जेको आहे लबनान सां इहो मुआहिदो कयो त कंहिं बि तरह सां हुनजो फ़ौज जे अंदरि अमल दख़ल न हूंदो ऐं दिफ़ाई मामलात में उन्हनि खे तव्हां जेको आहे सो ॾींदो अहमियत तॾहिं जेको आहे उहे शयूं थियूं पर उन खां पोइ बि बावजूदि हुनजे हिज़बुल्लाह पंहिंजो जेको आहे सो उहो अस्करी जेका कुवत हुई उहा बरक़रार रखंदी आई ऐं फलाह बहबूद जे वॾे कम सां गॾोगॾु उन्हनि उहा पंहिंजी साइड जेका आहे मज़बूत रखी हाणे मूंखे ईअं थो लॻे त वरी बि मुआहिदो जॾहिं थींदो त हिज़बुल्लाह खे हू कंहिं तरीक़े सां पाबंद कंदा त उहा या ख़तमु थिए पर ईरान जेको मुआहिदे में हिकिड़ी शइ रखी आहे त जंग जो ख़ात्मो हुन मां मुराद ई आहे त रुॻो ईरान सां जंग जो ख़ात्मो न पर हुन सां लाॻापियल जेके बि ॿियूं आहिनि गज़ा ऐं फलस्तीन बि ऐं हुन में पंहिंजो लिबनान ऐं बैरूत वग़ैरह बि त उन्हनि जे लाइ बि हुन जेका असां जंगबंदी जी जेका आहे डिमांड कई आहे त मुंहिंजे ख़्याल में कंहिं न कंहिं मुआहिदे ते जेॾी महिल पहुचंदा त हुन में इहे शयूं बि ज़रूरु शामिल हूंदियूं पर इज़राइल चाहींदो त ईरान सां मुआहिदे में ही शइ जेका आहे न हुजणु खपे ऐं ईरान चाहींदो त कंहिं न कंहिं तरह सां अमेरिका उन्हनि शयुनि में का गारंटी ज़रूरु ॾिए त हाणे ॾिसिजे त हुन में किथे जेको आहे सो वञी करे
थिए थो, पर ईरान कोशिशि कंदो त कंहिं न कंहिं तरीक़े सां को एग्रीमेंट में लिबनान जे अंदरि जंग बंदी जो ख़ात्मो अची वञे, पोइ हिज़बुल्लाह जो हुन में ज़िक्र अचे या न अचे। पर ॿिए पासे अहम जेको हूंदो उहो ईरान जो पंहिंजो स्टेट ऑफ होर्मुज़ ते पंहिंजो कंट्रोल उनखे बरक़रार रखणु, उन ते हुन वधीक फोकस रखो। ठीक है। अच्छा सर, मुख़्तसिर आख़िर में चवंदासीं पोइ ब्रेक ते वेंदासीं। ही जेको मूं इंट्रो में ज़िक्र कयो, लेरी जॉनसन साहब जेके आहिनि अमरीकी इंटेलिजेंस जा तर्जा निगार मशहूर रहिया आहिनि, उन्हनि जी पॉडकास्ट में जेका दावा कई आहे त ईरान पाकिस्तान जे थ्रू इसाक डार जो नालो खयो आहे, त पैगाम पहुचायो आहे अमरीका ताईं त ईरान खे वधीक दबाव में आंदो हुयो त एटमी धमाका बि करे सघे थो। छा वाकई ईरान इन पोज़ीशन में आहे? इहो हिकिड़ो वॾो सुवालु आहे। मां शुरू में जीअं चयो त 60% यूरेनियम जो रचाव जी तस्दीक त कनि पिया इदारा, पर 90% त कोन्हे। ऐं जेका पाण थोरी घणी तारीख़ ॾिसूं था त पहिरीं चवंदा त वॾे धमाके या वॾे तजुर्बे खां पहिरियों कोल्ड तजुर्बो कबो आहे, जेको पाकिस्तान लाइ चयो पियो न त 83 में पाकिस्तान उहो कयो, पोइ 98 में वञी फाइनल उन्हनि तजुर्बो कयो। अहिड़ो को तजुर्बो ईरान कयो कोन्हे पहिरियां। छा वाकई अहिड़ी का ईरान जी पोज़ीशन आहे या इहो सिर्फ़ु शो छॾियो पियो वञे ध्यानु छिकाइण लाइ? तो मुझे सवेर भी चयो त बग़ैर तजुर्बे करण जे 60 ग्रेड ताईं हुन जेको मौजूदु आहे उनखे बि उहो इस्तेमालु करे नुक़सान त रसाए सघनि था। छाकाणि त ज़रूरी न आहे त एटम बम वारो जेको आहे सो उहो तसवर हुजे ऐं उनखां पोइ वॾी तबाही थिए, पर जेको यूरेनियम ख़ुदि जेको रेडिएशन जो मादो आहे उहो जेकॾहिं कंहिं बि वॉर हेड सां कंहिं इलाइक़े में सिर्फ़ु किरे ऐं उते उहो ओपन एटमॉस्फेयर में अची वञे त उहो ई ख़ुदि वॾी तबाही मचाए सघे थो। त मुंहिंजे ख़्याल में ईरान जी इहा धमकी ज़रूरु हूंदी त जेकॾहिं हुननि सां वधीक जेका सां छेड़छाड़ कई वई त हू इहो ई 60 ग्रेड यूरेनियम जेको आहे उनजो बि कंहिं तरीक़े सां उते जेको आहे सो उनखे उछलाए सघे थो, जेको ख़ुदि उहो सभिनी खे ख़बर आहे उहो नुक़सानदेह थी सघे थो। छाकाणि नॉर्मल रेडिएशन जेका हूंदी आहे न उहा ई नुक़सानकार हूंदी आहे जेकॾहिं उनजी ताबकारी जेका आहे सा ग्रेड थोरो वधी वञे। हाणे जेकॾहिं किलो ॾेढ बि खणी पोइ हिकिड़ो वॉर हेड पहुचे इज़राइल ऐं उते उहो किरे त उन इलाइक़े में या उनजे मथां भले उनखे ई इंटरसेप्ट करे तबाह बि कनि, पर उहो यूरेनियम त उन खिते में हेठि ई किरंदो न। उहो जॾहिं हेठि किरंदो त उहो तबाही मचाए सघे थो। ऐं ख़ासि करे जेकॾहिं उहो हवा में ऐं पाणी में ऐं जेकॾहिं अहिड़ियुनि शयुनि में उनजो थी वियो इख़राज त उहो काफ़ी अरसे ताईं उनजा असरात जेके आहिनि उहे रहंदा। तव्हां इहो जेके बि चेर्नोबिल जेको आहे सो फाटो वाक़ियो थियो त उन में अञा ताईं उनजा जेके ताबकारी असरात आहिनि उहे उन इलाइक़े में हलंदा था रहनि, जेतोणीकि उहा शइ ख़तमु बि थी वई। त इहे शयूं जेके आहिनि ख़दशो इन खां ॿाहिरि रही नथो सघे, पर आउं सम्झां थो ईरान सिर्फ़ु धमकी जी हद ताईं इहा शइ मुमकिन आहे त चई हुजे, जंहिंजी ताईं तस्दीक त न आहे, पर इहो ख़दशो त असां अॻु में बि ॾेखारियो पए त ईरान जेकॾहिं घणो तंग आयो त हू इहा शइ करे सघे थो। पर मुंहिंजे ख़्याल में त हू फ़िलहालु हुनखे ख़बर आहे जेकॾहिं इन तरह सां हुन रिएक्ट कयो त पोइ ईरान जो पंहिंजो कंहिं बि तरह सां महफ़ूज़ रहणु ॾाढो ॾुखियो थी पवंदो, छाकाणि त इज़राइल वटि मुकमिल तयार वॉर हेड्स जी निशानदेही थींदी रही आहे त उहे उन वटि मौजूदु आहिनि, उनजो उहो इस्तेमालु करे सघे थो। बिल्कुलु जी, ठीकु आहे प्रोफेसर साहब, तमामु घणी महिरबानी। अवां असांखे वक़्तु ॾिनो। प्रोफेसर इनाम भट्टी साहब जो तजियो नाज़रीन अवां जे साम्हूं आहे। हिते ब्रेक जो वक़्तु थिए पियो, मुख़्तसर ब्रेक वठंदासीं, वापसि ईंदासीं। पाकिस्तान जी जेका सियासी सूरत हाल आहे पाण उन ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। जी नाज़रीन, ब्रेक खां पोइ हिकु भेरो ॿीहर प्रोग्राम में अव्हांखे चऊं था भली कार। पाकिस्तान जेका करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आहे उन ते ख़ासि तौर ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे हवाले सां जेके ख़बरूं हलनि पियूं थियूं उन ते पाण वधीक ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। सीनियर सहाफ़ी ऐं तर्ज निगार आहिनि मोहम्मद फ़हीम साहब, उहे पेशावर मंझां असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहिनि। मोहम्मद फ़हीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मोहम्मद फ़हीम साहब, एक मरतबा फिर हम सुन रहे हैं कुछ खबरें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जुड़ी हुई हैं। पहले तो हमने देखा कि मुसलसल जो ईरान जंग की वजह से 3 महीने तक कोई इस तरह की बातचीत नहीं हो पाई तहरीक इंसाफ के मामलात पर, खान साहब पर, लेकिन अब जो वो सीज़ फायर हुई है या मामलात उधर बेहतर हो रहे हैं तो फिर कुछ फोकस हो रहा है तहरीक इंसाफ के मामलात पर भी। और अब जो खबरें आ रही हैं वो ख़ास तौर पर जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास हुआ उसके बाद बड़ी खबरें आना शुरू हुई कि शायद बहुत ज़्यादा इख्तलाफात पाए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। सोहेल आफरीदी साहब से मेंबर कुछ नाराज़ हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे, आप माशाल्लाह बाखबर सहाफ़ी हैं और बड़ा करीबी देखते हैं इन मामलात को, तो क्या सूरत हाल है एक्चुअल वहाँ पर सर?
بہت شکریہ سر. دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اندرونی معاملات تو ہمیشہ سے خیبر پختونخوا میں اختلافات کے ہی شکار رہے ہیں، لیکن کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈا پور ان کی شخصیت بہت مضبوط تھی، ان کا پارٹی کے اندر مقام بہت مضبوط تھا. تقریباً 9.5 سال تک وہ منسٹر رہے، 5 سال خیبر پختونخوا میں رہے، 3.5 سال وہ فیڈرل میں رہے، پھر یہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان کے کافی قریب رہے، تو انہوں نے کافی گرپ رکھی ہوئی تھی. لیکن جیسے وہ ہٹے، سہیل آفریدی آئے پارٹی میں، موسٹ جونیئر تھے وہ، انہیں عمران خان نے چنا، لیکن ان کا پارٹی کے اوپر وہ گرفت سامنے نہیں آئی جو کہ علی امین کی تھی. اور شاید اسی وجہ سے خیبر پختونخوا میں اختلافات جو تھے وہ سنگین ہونا شروع ہوئے. اور جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ یہ ابھی کچھ عرصہ قبل وہ اختلافات انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر گئے ہیں، اور اس کی بڑی وجہ کابینہ میں توسیع ہے. کابینہ میں توسیع ہوئی، اور نہ صرف توسیع ہوئی بلکہ کابینہ میں توسیع مختلف گروپس کی بنیاد پر ہوئی. جو ہم دیکھ رہے ہیں جن لوگوں کو کیبنٹ کے اندر لیا گیا ہے وہ مختلف گروپس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور جب وہ اختلافات ہوئے تو یہ جو اس وقت ممبر ناراض ہیں وہ سہیل آفریدی سے ناراض نہیں ہیں. صحیح. یہ بیسیکلی اپنے مخالفین جو کہ ان کے علاقائی لیول پہ مخالفین ہیں ان سے ناراض ہیں. اور کیونکہ سہیل آفریدی نے اس ایک گروپ کو ہر ایک جگہ پر کسی ایک گروپ کو فائدہ دیا، ایک کو چھوڑا، تو وہ دوسرا گروپ نہ صحیح ہے. اور سب کو ظاہر سے بات ہے خوش کرنا بڑی مشکل صورتحال ہوتی. فہیم صاحب، اچھا محمد فہیم صاحب سان شاید رابطو سان کٹی ہوا ॿुधाइनि पिया त बिल्कुलु इख़्तिलाफ़ आहिनि ऐं त काफ़ी अरसे खां हलनि पिया था तहरीक इंसाफ जा जेके इख़्तिलाफ़ आहिनि. जी मोहम्मद फहीम साहब, आप फरमा रहे थे कि काबीना में तोसी के बाद इख्तलाफात तेज़ हुए, तो ये तोसी किसकी ख्वाहिश पर हुई, कौन कौन से नए जो मेंबरान आए हैं और फिर क्या मामलात फिर बने? جو علاقائی گروپس تھے بیسیکلی وہ اس کے اندر معاملہ ہوا ہے، وہ آپس میں مخالف ہوئے اور انہوں نے اس معاملات کو خراب کیا ہے. تو علاقائی گروپس کے جھگڑے نے اس معاملات کو بڑے لیول پہ کر دیا ہے اور اس نے اس معاملے کو خراب کیا ہے. اب سہیل آفریدی اس معاملے کو خود ہینڈل نہیں کر پا رہے ہیں، اور مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ صوبائی صدر جنید اکبر صاحب ہیں، ان میں بھی شاید وہ کیپیسٹی نظر نہیں آ رہی ہے کہ وہ گرپ دکھائیں، اور بیرسٹر گوہر بھی ایک انتہائی ایسی شخصیت ہے جن کا شاید وہ روب دبدبہ نہیں ہے پارٹی تنظیم کے اوپر کہ وہ اس معاملات کو ہینڈل کر سکیں. صحیح. تو پھر یہ معاملات آپ کو لگتا ہے کہ ان پر گرفت لے لی جائے گی، معاملات بہتر ہوں گے، یا فارورڈ بلاک کی جو خبریں بھی چل رہی ہیں دو کہ خیبر پختونخوا حکومت آفیشلی تو ان کی تردید کر رہی ہے، وزیر اعلیٰ بھی، ان میں پھر کتنی صداقت ہے کہ آنے والے دنوں میں، یا اب تک کوئی اس طرح کا کوئی گروپ بن چکا ہے یا بننے جا رہا ہے؟ دیکھیں فارورڈ بلاک تو نہیں ہے، یہ ناراضگی ہے، ناراض ممبران ہے، فارورڈ بلاک نہیں ہے. لیکن یہ فارورڈ بلاک بن سکتا ہے اگر تو ان کے مسائل کو حل نہ کیا گیا. یہ معاملہ سنگین ہو سکتا ہے اگر انہوں نے بر وقت اس مسئلے کو حل نہ کیا. اور اس ساری صورتحال میں گنڈا پور صاحب کا کتنا کردار ہے؟ کیونکہ خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کیونکہ واٹس ایپ گروپ تھا پارلیمانی ممبران کا، اس میں بھی پھر پہلے سہیل آفریدی صاحب نے کوئی میسج رکھا کہ کچھ لوگ پارٹی کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہی ہیں، بغاوت کی، تو کہتے ہیں کہ پھر جواب دیا گنڈا پور صاحب نے کہ کچھ لوگ کہ آپ سیدھے نام لیں. یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انہوں نے بیسیکلی جرنیل کہا، ان کا پارٹی کے اندر جرنیل ہے جس نے پارٹی کے باہر جنرل کو وعدہ کیا ہے کہ وہ حکومت گرائے گا. تو جس پر علی امین صاحب نے سہیل صاحب کا وہ ڈائلاگ دہرا دیا کہ آپ اس کا اس کی کس کی کر رہے ہیں، آپ نام لے لیں ان کا. تو یہ معاملہ بالکل ایسا ہوا تھا. لیکن جو میری بات ہوئی ہے ناراض ممبران سے، ابھی تک ان سے علی امین گنڈا پور نے رابطہ نہیں کیا ہے. علی امین صاحب فی الحال معاملات کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر سے جو انہیں ایک ان کے مخالف، ظاہری بات ہے سہیل آفریدی کے خلاف ہی ہے، تو سہیل آفریدی کی جو ٹینشن بنی ہوئی ہے ابھی تک علی امین میدان میں نہیں آئے ہیں. تو آپ اندازہ کریں جب وہ میدان میں آئیں گے تو پھر معاملات کتنے خراب ہو سکتے ہیں. تو میرے خیال میں سہیل آفریدی کو یہ معاملات بر وقت ہینڈل کرنے ہوں گے، تبھی ان کے لیے یہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ ہینڈل کر پائیں گے؟ اتنی کیپیسٹی ہے؟ جیسے شروع میں آپ نے کہا کہ گرفت کافی کمزور ہے ان کی. بہت مشکل لگ رہا ہے کیونکہ معاملات خراب سے خراب ہو رہے ہیں، اور اب پبلکلی سٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے. شفیع جان کہہ رہے ہیں کہ ہم زمین تنگ کر دیں گے. ساتھ ہی ہمارے سہیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہے، 5 بندے کہاں سے دکھا دیں. تو معاملات کافی خراب ہیں، وہ ہینڈل نہیں کر پائیں گے. تو پھر ہم کیا سمجھیں کہ پھر کوئی تیسرا وزیر اعلیٰ بھی آ سکتا ہے تبدیلی بجٹ کے بعد ہو سکتی ہے خیبر پختونخوا میں دوبارہ سے؟ جیسے دیکھیں کچھ بھی کہنا تھوڑا قبل از وقت ہوگا، کچھ بھی کہنا اس وقت قبل از وقت ہوگا، ابھی تھوڑا سا ارلی ہے. فی الحال تو بجٹ پیش کرنے کا چیلنج ہے. تو بجٹ کے حوالے سے ہم نے پھر دیکھا کہ علیمہ خان صاحبہ نے ایک فرمائش کی ہے کہ جب تک خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی جاتی آپ بجٹ منظور مت کروائیں. تو یہ کیا صوبے کے حق میں ہوگا؟ اور بجٹ ناراض ممبران نے بھی یہی شرط رکھ دی ہے کہ جب تک آپ کی ملاقات نہ ہو آپ بجٹ پیش ہی نہ کریں.
और सुहेल साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी गए हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि सूबा जो है वो कम से कम बजट पास ना होने या इवन पेश ना होने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। और बजट अगर पेश मतलब मंजूर ना हो तो इसको अदम एतमाद समझा जाता है, हुकूमत ऑटोमेटिकली गिर जाती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हुकूमत गिर जाएगी। तो फिर अलीमा खान साहिबा इस तरह के मशवरे कैसे दे रही है, मुतालबात कैसे करेगी, क्या बजट मंजूर ना करवाएं, क्या इससे उनको पता नहीं है कि फिर हुकूमत भी खत्म हो सकती है? देखें, अब अलीमा खान साहिबा को तो लास्ट ईयर भी यही सब कुछ चल रहा था, अब ये तो उन्हीं को अंदाजा होगा कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं कि हुकूमत उससे गिर जाती है, लेकिन बहरहाल इमरान खान की हमशीरा है, वो जो भी कहेंगी तो लोग उनके खिलाफ नहीं जा सकते। अच्छा, पहले भी सर हमने देखा था जब गंडापुर साहब ने बजट मंजूर करवाई थी तो बड़ी नाराजगी ये भी थी कि खान साहब से इजाजत या मुशावरत के बगैर आपने बजट कैसे मंजूर करवा ली और फिर वो फारिग हो गए थे। तो अभी भी क्या हम समझें कि सूरत हाल उसी जानिब जा रही है? देखें, बजट पास करने के हवाले से तो ये इख्तिलाफात पहले भी सामने आए हैं कि बजट आप क्यों पास करते हैं, पेश करते हैं, फेडरल गवर्नमेंट को आप थोड़ा सा उसको टाइट रखें, थोड़ा उनके साथ इख्तिलाफात रखें, लेकिन ये सूबे के हक में नहीं है। ये सूबे के हक में बिल्कुल भी नहीं है। सूबा और वफाक जो है वो एक साथ चले तो बेहतर होगा। पार्टी के मामला जो हैं वो मेरे ख्याल में तंजीम को देखने चाहिए, ना कि वो हुकूमत को इसमें घसीटें। सही। अच्छा मोहम्मद फहीम साहब, आपके मौके का फायदा लेते हैं कि ये भी खबरें चल रही हैं कि खान साहब से जेल में किसी साबका आर्मी चीफ ने मुलाकात भी की है, कुछ मामला बेहतरी की तरफ जाने, इस तरह की खबरें आई, फिर तरदीद भी आई। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है कि ऐसी कोई हाई लेवल की कोई मुलाकात हुई है खान साहब की, या सेहत के मामला अब खान साहब के कैसे हैं? नहीं, मुलाकात का तो कोई ऐसी तस्दीक नहीं हो पा रही है, लेकिन मुलाकातें और लोगों की हुई हैं। हाई लेवल की जो आप बता रहे हैं उनके मुलाकात नहीं हुई, कुछ पार्टी के एक आध दो लोगों की बात हुई है, मुलाकात हुई है, और उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने बताया है कि कौमी हुकूमत के मामले पे डिस्कशन हुई है। तो मुलाकात हुई है, लेकिन कोई ज़्यादा हाई लेवल के ऑफिशियल के साथ मुलाकात जो है उसकी तस्दीक कम से कम हमारे पास नहीं हो रही है। अच्छा, वो मुलाकात खान साहब से हुई है या जेल से जो बाहर बैठे हैं उनसे मुलाकातें हुई है? और अंदर खान साहब के साथ मुलाकात हुई है सर। अच्छा, और फिर बुशरा बीबी साहिबा से तो मुलाकात का सिलसिला अभी शुरू हुआ है, तो आने वाले वो शुरू हो गया है। ये तरीका भी है कि बुशरा बीबी के जरिए जो है वो मुलाकात होती रहे, वो बीच में अगर एक ब्रिज का किरदार अदा करती हैं तो ये पॉसिबल है, लेकिन बराह रास्त खान से भी मेरा ख्याल है जो मालूमात है मेरी, तो मुलाकात उनकी हुई है। अच्छा, ये जो मामला पीपल्स पार्टी के 28वीं तरमीम के हवाले से चल रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि फिर पीपल्स पार्टी भी कोशिश करिए पीटीआई से राब्ते के लिए, और फिर जो हमारे ना नजर आने वाले हुक्मरान हैं वो भी राब्ते कर रहे हैं, तो किसके राब्ते ज्यादा मजबूत हैं आपके ख्याल में? ये दोनों बातें मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी राब्ते कर रही है इसलिए कि वो अपना वजन बढ़ाना चाहती है। जो बाकी मुक्तदरा है उनकी तरफ से जो मेरी मालूमात है पीटीआई से कोई राब्ता नहीं हुआ है, इंडिविजुअल राब्ते हुए हैं, लेकिन बराह रास्त कोई राब्ता नहीं हुआ है। ठीक है मोहम्मद फहीम साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मोहम्मद फहीम साहब पेशावर जा सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सहाफ़ी आहिनि, उन्हनि जो मौक़िफ़, उन्हनि जो तजियो मुंहिंजे साम्हूं आहे, काफ़ी बाख़बर आहिनि ऐं हू ॿुधाइनि पिया त मुलाक़ातूं ज़रूरु थियूं आहिनि जेल में बानी पीटीआई सां। बहरहाल जिन मुलाक़ातुनि जो ज़िक्र थिए पियो त कंहिं आला सतही आला शख़्सियत जी मुलाक़ात थी आहे, उहा न थी आहे, उनजी तरदीद बि आई। बहरहाल असां चयोसीं त उन खां पुछूं। बाक़ी जेकी सूरत हाल नज़र अचे पई, सो सुहेल आफ़रीदी साहब जे लाइ वॾी वज़ारत बचाइणु ॾाढो मुश्किल नज़र अचे पियो। अॼु जी सूरत हाल ते पाण जेकॾहिं ॾिसूं था, साॻी सूरत हाल उन लाइ जुड़ंदी पई वञे जीअं गंडापुर साहब जे लाइ पैदा थी हुई, ऐं जेकॾहिं बजट पेश थिए थी ऐं मंज़ूर बि थिए थी, ऐं यकीनन थियणी आहे। जेकॾहिं नथी थिए त ज़ाहिर ख़ैबर पख्तूनख्वा जे सूबे जा माण्हू जेके आहिनि उहे मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾींदा ऐं हुकूमत जे लाइ अदम एतमाद वारी सूरत हाल ॼण थी वेंदी, हुकूमत पाण घर हली वेंदी। सो ॾिसूं था बजट मंज़ूर कराइनि था नथा कराइनि। जीअं मोहम्मद फहीम साहब ॿुधाइनि पिया त इहो मुतालबो हाणे रुगो अलीमा खान साहिबा न पई करे त खान साहब जी मुलाक़ात सां मशरूत कयो वञे बजट जी मंज़ूरी खे, पर जेके नाराज़ मेंबर आहिनि हाणे उहे बि इहो शर्त रखनि पिया। सो उन्हनि नाराज़ मेंबरनि खे सुहेल आफ़रीदी साहब कीअं मञाईंदा, न मञाईंदा, पाण घर हलिया वेंदा, या सूरत हाल छा कहिड़ो रुख अख़्तियार कंदी, पाण ईंदड़ ॾींहनि में हुन ते ॻाल्हाईंदासीं। असांजो अॼु जो ही प्रोग्राम हिते पंहिंजी पुॼाणी ते थो पहुचे। असां ॾींदा इजाज़त। अलाह निगहबान।